सबसे पहले थैंक्स टू नोवली जिसने मुझसे वो कराया जो शायद कोई और ना करा सकता था। और ये बात हो रही नाचवाक फ्योर्ड की। नाचवाक फ्योर्ड वो जगह है जहाँ पहाड़ आसमान को छूते हैं और बीच से निकलती है सूरज की किरणें और ऐसा लगता है कि जैसे कोई मूवी की ओपनिंग सीन चल रही हो। ये ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर लंबा एक हेवन ऑन अर्थ वाइब देने वाला एक जगह है। और इस एपिसोड में सबसे पहले मैं अपना क्रेजी फिशिंग एक्सपीरियंस दिखाऊंगा। उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे अंडर वाटर डाइव करने और ऐसे ऐसे मछलियाँ निकालेंगे कि आपकी आंखें लिटरली स्पार्कल करने लगेगी। और आखिरी में नोवली आपको दिखाने वाली है आर्टिक का एक सीक्रेट स्नैक, एक तरह का लोकल चॉकलेट जो यहाँ के लोग अपने खाली टाइम में खाते हैं। सो गाइस, वेलकम बैक टू एपिसोड 2 ऑफ नाचवाक फ्योर्ड विद विवेक जसवाल ब्लॉग्स। Yeah, Billy. Show me. Yeah. Oh my god. You see where my hands are? Okay. Oh, in the gills. There you go, now hold it up. Nice. The first time I'm holding a fish. Yeah? Oh my god. Okay, it's Put it back. I thought it's dead. How many did you catch? Okay. Maybe soon. Soon. Okay. So this is we can't cook it. We can't cook it. We don't want to. Okay, so like different. Hillary, do you have those pliers on you? I don't want to touch it. Oh, भाई तो मैंने ये पकड़ लिया, ये वाली फिश है. Yeah, let's get it. Oh my god. Man. It was like almost in the end. I got it. Can I have a picture with it? Hey, Andrew, can I have a picture with it? picture with it. You don't really want to hold it. They're really spiky. Oh, okay, okay. You're not really supposed to hold them much from there. More. Okay, yeah. Okay. Okay, oh, cool. We'll get you a char, okay? Yeah, yeah. Hey, buddy. Is it dead already or no? He's just trying to figure out a way to get out. He wants to come with me. He'll take a second to sculpt it. So almost मैंने अभी तक 3 फिश पकड़ लिए हैं और मैं अच्छा खासा मैं खुश हूँ। अभी और ट्राई करता हूँ। और मैंने अभी तक बड़े वाले नहीं पकड़े, मैंने 2 नॉर्मल वाले पकड़े। एक थोड़ा अच्छा शेडी टाइप का दिखता तो उसको हमने वापस कर दिया क्योंकि उसको शायद हम खा नहीं सकते, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा उसमें स्केलेटन और हड्डी है, तो उसको छोड़ दिया। बाकी नेक्स्ट मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। मैं बैटरी चेंज कर देता हूँ, मेरे इसके गोप्रो की बैटरी खत्म हो गई है। तो यहाँ पे सबने बहुत सारे फिश पकड़ लिए, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। एक यहाँ इसका इन्होंने गर्दन उड़ा दिया है, ये जो है एंड एंड्री उन्हें 5-6 अभी तक पकड़ चुका है और ये भाई ने यहाँ कलेक्शन कर रखा है। Got one more. Oh, cool. Yeah. Woo. Hey, can I have the video? Okay. Okay. Let me grab one. No, like unhooking it kind of thing. I'm just gonna hook it for you because Okay. it's a bit of a fighter and I don't want you to get touched by the hook. That hooks it. That hooks it. Oh man. Fires. Does it have on that one? That white box? No, it's not. Does anyone have a plier? So, एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना है तो आपको जो प्लेयर गार्ड है उसको आपको बताना पड़ेगा कि मैं इस एरिया में जा रहा हूँ भाई,
वो बंदा आपके ऊपर ध्यान रखेगा और वो नोट करते रहते हैं कितने बंदे बाहर गए हैं। सब यहाँ खड़े हुए थे, सबकी काउंटिंग ये बंदा रखेगा। बस यहाँ पे 3 पेड़ गार्डन एक और एक शायद 3 के साथ जोड़ियाक में है और एक वहाँ पे। चलो चलते वापस वहाँ पे कुकिंग यहाँ पे हो रही है और क्या पता स्विमिंग के लिए वहीं चलना पड़ेगा। सो आज हम स्विमिंग नहीं जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा लेट हो गया है। बाकी हमने फिश बहुत सारे पकड़ लिए एंड पर्सनली मैं तो चाहता था स्विमिंग करना, बट ये हम शायद कल फिर से लैंड पे आएंगे तब हम करेंगे। कुछ लोगों ने यहाँ पे रॉ फिश खाया है एंड थोड़ा सा हमने वहाँ पे कुक कर लिया, तो टेस्ट तो किया थोड़ा सा। मैंने उतना कुछ रॉ वाला तो मैं नहीं खा पा रहा था, बट मैंने कुक वाला ठीक लगा। एंड ये एक टीम है जो जा रही है शायद वो पत्थर से निकलने के लिए वैसा कर रहे। Where's my bag? Yeah, I got it, brother. Yeah. Stole it. Pull it. तो बस निकलने के लिए तैयार, बोट की तरफ जा रहे हैं। हमारी बेड़ी दूसरी बेड़ी है। कल फिर देखते कल नया जगह नया एडवेंचर। I saw your face in a big crowd, and now it's all I think about. I've had some leads, but nothing found. A puzzle. How is it? And I don't have a plan. I got a mess. I'm stuck with an impossible task. Looking through my files and I'm checking the news. I'm trying anything I can to get back to you. I'm in person. Nice job, G. Paul, take my van and go and get rid of your dog shit for those who want. Yeah. We made it. Yeah. Wet swimming. How did you enter water? So that big suit comes along with the shoe? Yeah, they're called hip waders. Oh, that's so cool. It's in here on purpose this time. Thank you. Sydney, you asked me, can you hold this and keep it safe? I had no memory of that. When you, I'm like, thank God. Yeah. Hello, dear. Thank you, Rose. Picture back. I didn't get it yet. अब ये लोग बना रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं बेड शीट के लिए। बेड शीट एक साइड से ड्राई फिश होता है, ये कुछ Beautiful. You guys got them nice. And how many days do you have to drench? 2 or 3. Oh. But in Maine, we have them in a box outside, away from the flies, so we don't get maggots on them. And yeah, and we take them in when it rains. Okay. So once it dry, you can just directly eat it, or Yeah. oh, cool. Does anyone want to see them? Last one. Yes. Put it in your backpack. Oh, okay. This one? Yeah. Fish spice. You good? I've never. Yes. So good. तो जो मीट है इसने अभी जो फिश इसने प्रिपेयर किया है वो इसको अभी एक जगह पे हम ट्राई कर देंगे, और 2 से 3 दिन बाद जब हम प्लेन में उतरेंगे मोस्ट प्रोबेबली तब उसको हम ट्राई करके देखेंगे। तो अभी एक स्पॉट देखने जा रहे हैं बाहर। फाइनली मैं अपने रूम में आ गया हूँ और जितने लोगों ने फिश पकड़ा था वो एक हम कोल्ड स्टोरेज बॉक्स में डाल दिए हैं, एंड जैसे जैसे जहाँ वो उतरते आएंगे वो फिश लेके जाएंगे। तो एक तो सीन वो हो गया। बाकी बहुत सारे लोगों ने स्विमिंग का प्लान बनाया था, जैसे यानी ने फिशिंग का प्लान बनाया था बट वो वर्क नहीं किया, कपड़ा अभी भी अंदर ही है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल हम फिशिंग करने जाएंगे एंड कल हम स्विमिंग करने जाएंगे, तो वहाँ पे कर लेते हैं। एंड इसके बाद ऑलमोस्ट डिनर रेडी है। थोड़ा सा चेंज वेंज करता हूँ, अंदर जो मैंने इनर वगैरह पहना वो निकाल देता हूँ एंड जाता हूँ नीचे डिनर की।
It was pretty shocked to today. Was having a good day, like whether they were talking about like how beautiful the landscape was, like talking about how they made friends today, catching fish. Like everybody just had a good day. It was really nice to see, and I like find my personality feeds off of other people's energy, so it like made me really happy today. What about you? For me, it was the first time for me. I was fishing, I guess. Yeah, I held the rod multiple times, but never fished any. So this time I got 2 fishes. So I'm happy about that. And what is it? Oh yeah, I always wanted to visit some place like Norway, Sweden, like where you have big mountains on the sides and a large channel in the between. Yeah, so that was my highlight. Yeah, thank you. Yeah. If I could add few things, I would do the drone thing, and another was swimming. I was sad. I Maybe leave too early. Yeah. They were in the last group. I think they didn't have to give up. Okay. Yeah, I would have loved to go. Ooh. कल हम फिर से लैंड उतर रहे हैं जो कि बेस कैंप होने वाला है And, हमारे साथ जो 3 साथी थे जो हमारे मेन गार्ड थे वहाँ पे उतर जाएंगे तो वो एक बात है कैंपिंग करके है उतर रही है तो हम 4 बंदे होंगे और दो नए लोग हमारे साथ एक अच्छी बात है बाकी मीनवाइल हम क्या है सारे लोग अपने आपस पड़ोसियों से बात कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं क्या हाईलाइट कहाँ जाते हैं सॉरी कैसा था दिन आज तो वो एक चीज़ है कल कहाँ जा रहे हो आपको कुछ बताता हूँ तो जगह हम कल जा रहे हैं उसका नाम है सैगलेक फ्योर्ड थोड़ा सा यहाँ पे जितने भी जगह है वो उनके थोड़े आसपास ऐसे नाम रहते हैं आज जो गए थे नाफा फ्योर्ड करके कुछ था तो ये है सैगलेक फ्योर्ड एंड यहाँ जाके देखते हैं यहाँ पे नेहा करके जो हमारे साथ डाइवर है साइंटिस्ट है उसने एक स्टारफिश या जेलीफिश पकड़ा हुआ है तो जाके देखते हैं और टच करके देखते हैं अगर हो सके तो Whoa! Like a bunch of tiny ones. Is it sugar? It's called sugar kelp. Yeah, they're like a type of worm, and you can see their teeth. They're a tube-forming worm, and you can see their teeth are gold. If you look, their teeth are fully metallic gold. Is it real gold? No, not real gold. Okay. Oh, like that. But do you see its color? It's like fully gold. Wow! You see that? And so they build their own homes out of sand. What are they called? They're called tube worms. They're a type of tube worm. But these ones are called cone worms. But they build their own homes out of sand. Just Okay. see, eventually it will start reaching out to you. Is it a living? It's not a plant, right? I deserve it. Okay. It can move, right? Can we yoink Can we yoink the Aristotle's lantern from him? No, we don't need to yoink that. Oh, it has an eye. No, that's not an eye. That's, what is it? Aristotle's lantern. What is that? It's a little beak that it eats from and pulls in. No. Yeah. I said beak, but no. Yeah. I can like taste the like. Contract job. It's moving? What happened? It's a living. It's squirted? It's so floppy. I've never seen a starfish so floppy. That's nice. That's like I gotta go back in for a second. Well, the top one's a sun star, I think. That's what Sydney said. Can you take a picture?